Morning student, welcome to Canjyoti online class. I am your English teacher. Today we discuss a birthday surprise for mama, chapter number 9, English reader. Okay. So first you open your book. Okay. A birthday surprise for mama, English reader, page number 7. Okay. So dear student, we have to surprise to many people on a birthday, wedding ceremony, many ceremony. We have to surprise to others person like our uncle, auntie, father, mother. So today we reach a birthday surprise for mama. यानी कि मम्मी को हम लोग कुछ सरप्राइज करेंगे बर्थडे के दिन ही, ठीक है। सो व्हाट डिड यू डू ऑन योर लास्ट बर्थडे? आपका जो लास्ट बर्थडे था उसमें आप क्या क्या किए? उसका एक क्वेश्चन, जस्ट यू सेंड योर फ्रेंड, सेंड योर पेरेंट्स, ओके, डिस्क्राइब योर बर्थडे केक एंड स्पेशली फॉर योर बर्थडे केक। now the days and the lockdowns in whole across our India, cake is not available, so we're making it home, a cake, small cake, okay. So one of the small girls named Alia, so listen very carefully, this is for important for you, okay. So dear student, first you listen very carefully and understand it, okay, then we do some question answer also. So आलिया, wake up early. आलिया एक लड़की का नाम है, वो बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाती है। She jump out of bed and run to the kitchen. So suddenly she jumps out and bed on and run to the kitchen. जैसे ही वो उठा और किचन की तरफ दौड़ते हुए चले गए। It's mama party. आज मेरे मम्मी का बर्थडे है। So here is the just extent of the mummy or ma to comfort a mama. Okay, so here is the mama words is mummy, ma. Okay, so it is mama's birthday. What? Mama's birthday. But there is no birthday cake on the kitchen table. लेकिन क्या है, मम्मी का बर्थडे है लेकिन किचन में देखते हैं वहाँ पे टेबल में तो कोई भी केक नहीं। लेकिन क्या है, हम लोग बर्थडे के दिन अक्सर केक काटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। सो देयर इज नो बर्थडे केक इन द ऑन द किचन टेबल। आलिया ओपन द फ्रिज टू डू दैट। आलिया आल्सो ओपन टू फ्रिज, ओके। फ्रिज देखते हैं और वहां पे भी कुछ नहीं है, ना केक है ना और कुछ सामान। देयर इज नो बर्थडे केक इन द फ्रिज। और फ्रिज में भी बर्थडे केक नहीं। नो बर्थडे केक ऑन द काउंटर, नो बर्थडे केक नियर द सिंक, नो बर्थडे केक ऑन द काउंटर। काउंटर में भी कोई बर्थडे केक नहीं है, ना सिंक में भी आसपास कोई भी बर्थडे केक दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन आज जो है आलिया का मम्मी का बर्थडे है। नो बर्थडे केक एनीवेयर, नो बर्थडे केक एनीवेयर, कहीं भी देखे ढूंढे तो एक भी बर्थडे केक नहीं है। ऑन पापा's बर्थडे आलिया एंड मामा हैड गॉट हिम बर्थडे केक इन बेड, ओके। तो पापा का बर्थडे में जो है आलिया और मम्मी दोनों मिलके बेड में ऑलरेडी रखे थे केक, लेकिन इस टाइम केक ही नहीं है। पापा वाज सरप्राइज, और पापा जो यानी कि आलिया का जो फादर है सरप्राइज हो गए, आश्चर्यजनक हो गए कि कहाँ से केक आ गया। पापा वाज सो सरप्राइज्ड। नाउ इट वाज मामा's turn, but पापा वाज away for meeting and there was no cake. लेकिन आज जो है मम्मी का बर्थडे है और पापा जो है एक मीटिंग, जरूरी मीटिंग में बाहर गए हुए। देयर वाज नो केक, और पापा जो है आज मम्मी के लिए केक ही नहीं लाए, ओके। सो बट पापा वाज अवे फॉर ए मीटिंग एंड देयर वाज नो केक। सो डियर स्टूडेंट, देन ओपन टू 71 पेज, ओके। व्हाट कैन सी डू
टू सरप्राइज मामा। लेकिन अब क्या किया जाए, मम्मी को सरप्राइज करना है, केक नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन किस तरह से उसको बनाया जाए, कैसे उनको एक सरप्राइज दिया जाए। She opened the fridge again. Then Alia opened the fridge again. Okay. She looks inside till her nose is gold. Okay. देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही फ्रिज के अंदर वो अपना फेस को डालते हैं तो तुरंत जो नोज जो है हमारा वो कोल्ड हो जाता है। आलिया का नोज जो है कोल्ड हो जाता है, यानी कि बहुत ही ठंडी हो जाता है। बट देयर इज नो बर्थडे केक, लेकिन क्या है वहाँ पे बर्थडे केक ही नहीं है, दैट इज एप्पल बटर। वहाँ पे क्या देखते हैं, एप्पल बटर, एप्पल एक है और बटर है, मामा फेवरेट, और ये जो है मामा का बहुत ही पसंदीदा है, बट एप्पल बटर। आलिया गेट्स एन आइडिया, देन आलिया गेट्स एन आइडिया, उसको कुछ सूझ गया, यानी कुछ दिमाग में कुछ अलग सा एक प्रभाव पड़ा। ठीक है। आलिया टेक्स द जार ऑफ एप्पल बटर एंड प्लेस इट ऑन द काउंटर। उसके बाद आलिया जो है उसको पूरा एप्पल बटर को जार को ले गया प्लेस पे, काउंटर पे। ठीक है। सी गेट्स ए प्लेट, स्पून एंड पीस ऑफ ब्रेड। उसके बाद एक प्लेट लाई, स्पून लाई, पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड आपको पता है, ठीक है। सो पीस ऑफ ब्रेड, शी टेक्स आउट a spoonful of butter and spread it on the bread evenly। उसके बाद प्लेट में लिए और उसके बाद जो है ब्रेड लिए, कुछ ब्रेड एक नीचे ऊपर लेंगे, पहले जो है ब्रेड को रखे, उसमें एप्पल बटर डाले, फिर ऊपर फिर से एक ब्रेड रखे। जस्ट हाउ मामा लाइक्स इट, तो इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से मम्मी जो है लाइक्स करती है। स्माइल ग्रोज ऑन Alia's face, and Alia's face already smile grows on that time, very excited to making a mama's birthday cake, which as the things that is the very important day for the Alia's mother birthday. Okay, so Alia making a one of the bread, butters, apple, mama's favorite, Alia's mama's favorite. So she making a very surprisingly excited, and that day is very good day for mama, because a birthday for Alia's mama. So the student, a smile grows on Alia's face. It grows bigger and bigger as she walks to mama's room with the bread, and she runs to a room of mama's. She grows bigger and bigger as the walk to mama's room with the bread, और दौड़ते हुए ज़्यादा कदम रखते हुए मामा की जो रूम है उस तरफ चल गई। और ऑलरेडी शी मेकिंग ए ब्रेड, एप्पल बटर ब्रेड, एंड मेकिंग ए केक। ओके, सो finally she surprised to mama's. Okay, then happy birthday to mama, happy birthday to mama, she sing happy birthday to mama, happy birthday to mama, she sings. Who sing? Alia sing happy birthday to mama, happy birthday to mama. Then wishes to mama, Alia said, mama takes the plate and hugs Alia tight. उसके बाद क्या है, मम्मी जो है प्लेट को पकड़ी और बहुत जोर से आलिया को हक की। ओके, पकड़ लिए, एक प्यार भरा एक सुंदर वहाँ पे एक जो है माहौल पैदा हो गया, और दोनों माँ बेटी की एक प्यार जो है देखने को मिला। और बर्थडे जो है मामा का था, तो जैसे ये कुछ भी केक नहीं था और ये खुद अपने हाथों से जो है बनाया हुआ है केक, उसको देखकर मम्मी जो है सरप्राइज हो गए। इज इट गुड सरप्राइज? आज आलिया, ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज रहा बोल के पूछ रही आलिया। इट इज द बेस्ट बर्थडे सरप्राइज एवर सेज मामा, इट इज द बेस्ट बर्थडे
सरप्राइज एवर सेज मामा। और मम्मी जो है बहुत खुश हुई और बहुत ही सरप्राइज हो गई कि इतनी सी उम्र में ये इतना एक अनोखा तरीका से दिमाग बना और अपने हिसाब से एक केक बनाना, एक अपने आप में बहुत ही टैलेंट माना जाएगा, ठीक है। सो you also making in your mummy's, papa, auntie, uncle's birthday, grandfather, grandmother's birthday to surprise them, okay. You have to also talented student, okay. So you do yourself on birthday of any body, your parents, okay, everyone, because is very important for you. So you also making a surprise for your parents, your grandmother, grandfather, your cousins, brother and sister, okay. So this is the chapters finished, and writer is Mahani Bunel is very happy and fun today. You know, Mahani Bunel's writing is very good, okay. I think you have to understand all the sentence, all the words, okay. So dear student, do yourself and read this small story, Arya's story, which type of making cake and for mother, and why she surprised to mama, okay. So dear student, you have to just read and understand and do all the question answer. First you have to open your book and copy. First write any words. The new words is help you to know a story. So you have to write this one, new words, okay. Fridge, you know what is the fridge? Nowadays fridge is available everywhere, every home. So you know fridge means a रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे कुछ सामान रखे जाते हैं और सामान जो है सुरक्षित रहता है और ठंड रहता है, जिसको हम कभी भी निकाल के खा सकते हैं, फ्रेश रहता है. सो दैट्स मीन ए फ्रिज, ए रेफ्रिजरेटर. काउंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर? ए लॉन्ग फ्लैट सरफेस ऑफ टेबल. ए लॉन्ग फ्लैट सरफेस और टेबल, उसको बोलते हैं काउंटर, जहाँ पे कुछ हम लोग कर सकते हैं, बड़ा सा जगह रहता है काउंटर. ओके, सो लॉन्ग फ्लैट सरफेस और टेबल. सिंक, यू नो मीनिंग्स ऑफ सिंक. ए बेसिन where dishes are washed. जैसे हम लोग कुछ खाने के बाद धोने के लिए जो जगह यूज करते हैं उसको बोला जाता है सिंक. और वॉशिंग डिशेस आर वॉश्ड. कुछ सब्जी धोना हो या कुछ प्लेट धोना हो खाने के बाद या खाने से पहले, सो दैट्स प्लेस इज सिंक. ओके, सो द स्टूडेंट यू हैव टू राइट दिस वन. Okay, then we write another symbol. It's very important for you, and I think its story is very beautiful and describing very funny and happy. Surprise. What is the meaning of surprise? फीलिंग. अक्सर हम लोग क्या है दूसरों को सरप्राइज देते रहते हैं. सो फीलिंग और शोइंग सरप्राइज. जैसे किसी को चौंका देना, किसी को मालूम नहीं रहता है कि ये होने वाला है, सो वो हम लोग कर जाते हैं.
सो एक सरप्राइज दे जाते हैं, एक फीलिंग्स रहते हैं हमारे ऊपर, और दूसरे को जो है चौंकाने वाला एक सरप्राइज जो है बहुत ही अच्छा रहता है। मच बेटर फील अनदर पर्सन आज मच spoonful as much as one spoon can hold। पूरा स्पून में जो है चम्मच में पूरा बहुत सारा बटर, एप्पल बटर लेके पकड़े हुए हैं आलिया। So as so much as one spoon can hold। Evenly, what is the meaning of evenly? Here, the meaning of evenly, when all parts of surface are covered with the same amount of something। So dear student, even with the here, what is the meaning? Where all parts of surface are covered with the same amount of something। तो जो पूरा हो जाता है और कुछ भी इसमें कमी नहीं है, तो जो हमको चाहिए रहता है, so that's mean evening। Okay, so dear student, you understand all the story better, so let's do some question answer। Okay, are you ready? Okay, I think you have to ready and open your copy, let's do some question answer। Okay, first we do comprehension, mark this sentence as right or wrong। Okay, so 72 page, mark this sentence as right or wrong। ये जो है right है कि wrong। first the question, mark the sentence as right, that plus you have to tick, or wrong, that plus you have to tick X mark। Okay, here is the boxes। So first number you have to just I do Alia woke up late। It is right or wrong? So the student, Alia woke up late। No, Alia woke up early। So here the sentence is wrong। So you have to put in this box wrong। Okay, so wrong mark, X mark, first number is completed। So you have to understand the sentence first, then you have to do yourself। Alia, then second number, Alia was searching for her papa birthday cake। For her papa birthday cake। Is it right? Just you listen, see the blackboard and read the sentence। Alia was searching for her papa's birthday cake। Is it right? No, this is wrong। This place using her and papa is the main person। Okay, you know। So which birthday today we celebrated? Mama's birthday। Okay, so Alia
uh, was searching for Mama's birthday cake. So, is it the right or wrong? So, this sentence is wrong. So, we have to put in these boxes X mark and wrong mark. Okay. So, dear student, rest others number you have to do yourself. Okay. Alia's papa was out for meeting. Yes. Peanut butter was mama's favorite or not? Apple butter is the mama's favorite. As she walked to mama's room, Alia became sad and sadder. Wrong. Alia's surprise was the best birthday surprise. Right. Okay. So do yourself all rest number. It's very easy, not for a difficult. So dear student, first you understand all sentence, then you have to do. Okay. Help of your friend, help of your parents. If you don't know, then leave that once. I am here. I will ask the next time. Okay, and I will give you a question answer. Okay. So first do yourself is better for you. Okay. So now fill in the blanks with words. Okay. Some words is here. Fill in the blanks with this word. With this word. So here is some words. Okay. See the book. Here is word 7 the page. Surprise, singing, favorite, stay, bed, walk, kitchen, idea, peace. Okay. So here is some words, and we fill up this small stories. Okay. On Papa birthday, Alia and her mother had got him birthday cake in peace. Cake in peace. First you have to do yourself. First number you have to do and fill the blanks peace. Then other number is kitchen. Okay. Kitchen. Then another number idea. Okay. So do yourself. It's all are very easy. Okay. Just you understand it, all the sentence and all the stories, small story. Then you have to do yourself, and the sentence words is here. Okay. So you have to correct word and correct place using. Okay. सही जगह पे आप लोगों को लगाना है. तो first just I for example and just do some numbers. Okay. Peace, kitchen, idea. See the verbs. This one very important for you. So do yourself. If you don't know, then I will give you question answer. Okay. Then what thing did Alias use to make the bread and butter sandwich? This is for your homework. Okay. It's very easy. What things did Alia use to make the bread and butter sandwich? Bread and butter sandwich में क्या क्या यूज किया गया है आप लोग यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे लिखना है. ये जो है ब्रेड है, 2 ब्रेड इसी है. फर्स्ट ब्रेड में क्या भरे, सेकंड ब्रेड में क्या किए, बुक में है. बुक के सहारे आप लोग जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पे भर सकते हैं. ओके. सो द स्टूडेंट इज वेरी इजी, नॉट ए डिफिकल्ट. Then discuss why was simple bread and butter sandwich made by Alias the best birthday surprise for the mom? Because you know there is no any birthday cake and there is no any things. So Alia made a birthday cake from bread and butter sandwich made from the mamas. Okay. What was so special about Alia's surprise? Is it true that when we do something out of love, it became special? It is true because one of the loving bonding from two people, one is the mother said, one of the daughter said, Alia making his or her own hand to said by making
a birthday cake from the mama said. Okay, it's very special. Okay, so discuss your friend, discuss your parents. This one. Okay. Next number, count the picture and spell out the numbers. So dear student, just you see the some elephant is here. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So how many elephant is there or here? 13. So you have to write 13 elephant. So as you possible, you have to count these birds. How many birds you have to count? Then you put how many birds in blanks. Okay. So dear student, just you count and write in this place. Okay. Then it's cupcakes. Okay, you just children are very choosing or likes for cupcakes. So I think we have also enjoyed many times. So just you have to do yourself how many cupcakes. Just you count and write here. Okay. So it's also finished. Okay. So just this one, look at the picture and fill in the blanks with these words. Some word is there: party, candles, gift, balloon, strings, caps. So just you have to see the blackboards. Some question answer I do. Then you see which place we have to doing or putting a words. Okay. So 75 page, number 1, a big birthday. A big birthday party. So party here you have to put in these blanks. Okay. So sentence is completed. A big birthday party. Okay. Just using a 6 word, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putting the a good place, correct place, then sentence is completed. So just to see the blackboard, colorful candles, colorful candles and balloons. Okay. So just two numbers also I have completed. First number, a big birthday party. Second number, colorful candles and balloon. Okay. So just do yourself rest other number 3, 4, 5. Okay. Do yourself. It's very easy, not difficult. Okay. So just do, and if you don't know, then leave it. Okay. Just I give you a question answer that I have to easily do all the numbers. Okay. So the another number we have to do or read. Are these your books? This is your talk about two or more people or things near us. These those is you talk about two or more people or things that are already. So just you know a grammar department. So just write in your copy which place we using these are used. This is used. Just you know to talk about two or more people और things near us जो हमारे आसपास रहेंगे लेकिन बहुत सारे पीपल और थिंग्स रहेंगे तो दैट प्लेस वी यूज बीच दैट प्लेस वी यूज बीच हम लोग उस जगह पे बीज लगा सकते हैं so which place we use those just you see the blackboard those is used to talk about two
more people or things that are far away, यानी कि हमारे से जो दूर है और बहुत सारे पीपल या थिंग्स हैं और कुछ चीजें या लोग हैं, तो उस जगह पे हम लोग दोज लगाएंगे। तो जस्ट यू नो दोज इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टू और मोर पीपल और थिंग्स दैट आर फार अवे, हमारे से दूर हैं, उस समय में हम लोग दोज लगाएंगे। ओके, so just we do some numbers। okay, so be ready, just you write in this sentence or these or those in your copy, it's very important for you, it's grammar requirements, grammar is very important for you for knowing English। okay, fill in the blanks, these are those, fill in the blanks with these are those। okay, so just you have seen the blackboards, dear student। one number, did you make sweets? Did you make sweets that we are eating those sweets? So just we have to using those sweets that we are eating। So dear student, first you know which place you have to do using these are two। Did you make those sweets that we are eating? So that this place, so sentence we have to complete using those। okay, first number is completed, the other rest number you have to do yourself। okay, number 2, dash bees will sting you if you go near that tree। okay, so 1 to 5 number is there, so using these and tools। okay, it's very easy, not difficult। okay, so do yourself। so dear student, do yourself all the numbers 1 to 5 numbers। so dear student, we have to do another number। okay, so be ready। another number is pronunciation, read these words aloud, note how the letter C sound। okay, so how the letter C sound, here is C sound, circle, camel, circus, care, cake, coin। okay, so write this word where letter C sound same as S in sun। so 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एस साउंड, सन हुआ है, और क्या हो सकता है, सुन हुआ, और बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओके, सो डू योरसेल्फ। फर्स्ट नंबर, राइट वर्ड्स वेयर लेटर सी साउंड सेम एज इन सन। यहाँ पे सन जैसे कुछ वर्ड्स होगा, एस वी एन, एस ओ एन, सन और सनलाइट। ओके, सनराइज, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। सो यू हैव टू यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओनली यू हैव टू राइट 3 वर्ड्स। ओके, नंबर 2, राइट दिस वर्ड्स वेयर लेटर सी साउंड सेम एज के इन काइट। काइट हुआ, कील हुआ, ओके, नाइफ हुआ, ऐसे वर्ड्स आप लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू 3 वर्ड्स डू इन दिस प्लेस। ओके, then dear student, listening and speaking, that is your work, listening and speaking। listen to the audio and number this sentence is correct word। first you listen your audio, okay, number this sentence is correct। Ranjan's mother covered the gift with the wrapping paper neatly। इसको आप लोग करना है 1 to 5 तक, 1 to 6 तक है। okay, do yourself this one। okay, listening and speaking, it's your homework।
you do in your home. Okay, it's your work, it's not my work. So you have to help of your parents, help of your friends, do all the numbers correctly. Okay, then look at this picture and compare. Talk about how they are different from each other. Describe each picture. Do not forget to talk about different color and pattern. So look at the picture and compare. Talk about how they are different for each other. इन लोग जो है क्या डिफरेंस है, कलर से डिफरेंस है कि पिक्चर से डिफरेंस है कि बांधने से जो है डिफरेंस है. ये जस्ट यू हैव टू talk about your parents or your parents and your friend about different color and pattern. So just you have to do yourself and write here. नीचे में आप लोग को लिखना है. ओके, किस तरह से ये डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है कि उनके बांधने में डिफरेंस है, इस शेप में डिफरेंस की साइज में डिफरेंस है. देन हैव टू डू योरसेल्फ. ओके, then composition. Make birthday card your mother. On left side make you drawing of your choice and color it. On the right side write a birthday message for your mother. Okay, just you have to do your work. Now your work. So just you make a birthday cake or birthday card, one of the birthday card. Okay, on left side make any drawing into choice, color it. एक ड्राइंग बनाना है आप लोगों को, केक का हो या कुछ भी आप जो मम्मी को देना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप ड्राइंग करेंगे और वहाँ पे लिखना है डियर मदर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. जो भी लिखना है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे. सो डियर स्टूडेंट, फिल दिस वन for your own mind, help of your friend, help of your parents. Okay, but do yourself. Okay, it's compulsory. Okay, so it's making any color of cake as you wish, trees, anything else you have to draw and color it. Then you have to write on the mother's day, happy birthday to you mothers and wish you very much. Okay, so do yourself, dear student. So dear student, our chapter is completed. Okay, our chapter is completed. A birthday surprise for mama. Alia surprise me very good making cake. Okay, and just take care of mothers. It's very good. So we have to do. हम लोग यहाँ पे क्या सीखते हैं कि हम ये सीखते हैं कि हम लोग को कुछ ना कुछ मम्मी के लिए, पापा के लिए, अंकल के लिए, आंटी के लिए कुछ ना कुछ बर्थडे के दिन या कुछ स्पेशल मौके पे हम लोग बना सकते हैं, उनको सरप्राइज कर सकते हैं. आप केक नहीं बना सकते और कुछ बनाकर भी उनको गिफ्ट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, do yourself any special moment surprise for your parents. Okay, your family, your cousin, your friend. Okay, so dear student, today we complete the chapter number 9, English reader. Okay, so finally I hope you understand all the story very better, and I hope you do all the question answer yourself. If you don't know, so don't harassment or don't panic. I am here. I will do all the question answer and give you next time. Okay, as a PDF file, as a WhatsApp group. Okay, by the open of our school, that time I have do all the question answer. Okay, and I hope that time I am you doubt clear also. Okay, if any doubt, that time you ask the question, then I will give the good answer. So dear student, today we complete chapter 9. Okay, so for the last information, the coronavirus in across our world, across our India and Odisha also. So be careful and be safe, and many times you have to wash his hand, sanitizer uses mask. If important, you have to go any other place. If you don't necessary, so don't go outside. Okay,
So because June month is very difficult, some migrate shifts are coming maximum, and is very dangerous for us, for our environment. So don't go outside, don't play outside, and stay your home, save yourself, and read properly. Do all the question answer. See all visualization for all subjects, not only English. Okay, for we have to go that site Gyanjyoti online classes. We have to go and subscribe the channel, and subscribe to and large things and very much, and share your friend also, share your cousin also, is Gyanjyoti online classes. So the student safe, stay your home, safe your home. Okay, so today complete our course. Thank you very much. uh, have a nice day.